yakini ya. Kehidupan ini bukan satu yang meyakinkan, tapi adalah satu tipuan bagi kita. सफर लंबा है तो सा साथ ले ले. Hadirin, karena perjalanan yang begitu panjang sehingga kita memerlukan bekal yang banyak. अमल को खालिज कर ले, परखने वाला बड़ा होशियार है. Maka hadirin, bagaimana sikap kita ini selalu sadar sehingga kita berusaha selalu bagaimana memperbanyak amal-amal kita. आइंदा बड़ी बड़ी घाटियां आने वाली है. Hadirin, एक घाटी मौत की है, सुन लो. एक घाटी मौत की. अगर ईमान पर खात्मा तो बेड़ा पार, वरना खतरा ही खतरा. मौत के मौके पर मलकल मौत आएगा. अगर नेक वक्त है तो रूह ऐसे निकालेंगे जैसे गुदे हुए आटे में पाल निकालते हैं, या माँ सोते बच्चे मुंह में से छाती निकालते. और अगर बदबख्त है तो जैसे पूरे जिस्म में कांटों की तरह यूं टेढ़े काट यूं पकड़ के फेंक देगी. dengerin bayan sih, dengerin bayan. इंतहाई तकलीफ हो रही होगी. बनी इसराइल का एक बार नबी सफर कर रहा था, रास्ते में खोपड़ी पड़ी. उससे पूछा, कौन अल्लाह मेरी बात करा? कहने लगा, मैं फलां मुल्क का बादशाह हूँ. पहले फला हशम और कदम और घोड़े और मुल्क पर पहुँचे थी. मौत आई, मेरी रूह निकाल ली और मुझे तोड़ के घड़े में डाल दिया. आज मैं यहाँ मेरी खोपड़ी पड़ी हुई है. पूछा गया, क्या तुझे मौत की कब्र में कैसी रही? मैं कहने लगे, पहले कब्र से पहले पूछो मौत पे क्या हुआ. 10,000 साल हो गए मुझे मरे हुए, अभी तक नाखूनों में से मौत की तकलीफ निकली नहीं है. मौत की तकलीफ इंतहाई दर्जे की है. अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा दे तो आसानी है, नहीं तो खतरा ही खतरा. एक घाटी मौत की है. मरते ही जब मौत घर वाले रिश्तेदार सारे खड़े होंगे, कोई रोक नहीं सकता. रूह उसकी फरिश्ता निकालेगा, फिर कफन पहनाया जाएगा, नहलाया जाएगा, फिर उसे कब्रिस्तान पर भेजाया जाएगा. हजारों मन मिट्टी के नीचे रख करके कह दिया जाएगा, तू जाने तेरा अमल मिट्टी डाल देंगे. अब फरिश्ते आगे पूछेंगे, तेरा रब कौन, तेरा नबी कौन और तेरा दीन क्या? वह दीन सवाल. एक मसला सबसे बड़ा कब्र का है. या तो कब्र रोज़तुम रियाज़िल जन्नह और हुफ़्रतुम हुफ़्रन नार. अल्लाह ताला अल्लाह के नबी हमेशा अज़ाब कब्र से पनाह मांगता था. अल्लाह मिनी अऊज़ु अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह मिनी अऊज़ु मिन अज़ाबिल क़ब्र. इसलिए मेरे दोस्तों, और हज़रत आयशा फरमाती थी, ऐ अल्लाह हासिबनी हिसाबन यसीरा, मेरे हिसाब को तू आसान कर दे. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sampaikan bahwa yang pertama yang akan kita hadapi hadirin itu adalah kematian. Dan kematian ini adalah satu yang pasti yang akan kita temui. Maka ketika orang yang beriman dia meninggalkan dunia, menemui kematiannya, maka dia akan merasakan kemuliaan yang luar biasa. Tapi sebaliknya, apabila dia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kematian datang, bencana hadirin akan mulai menimpanya. Orang mukmin ketika meninggal hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya dengan sehalus mungkin. Seperti kata orang yang mencabut rambut dari tepung. Begitulah keadaan ketika orang beriman dicabut nyawanya. Tapi hadirin, bagaimana dengan orang yang tidak beriman kepada Allah?
orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ya, seperti tubuhnya itu dipenuhi dengan duri-duri. Dagingnya dipenuhi dengan duri-duri, kemudian duri itu akan dicabut satu persatu dari tubuhnya, hadirin. Begitulah keadaan satu orang yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, keadaannya, ya hadirin, ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, beliau cerita satu kisah di zaman Bani Israel. Satu ketika salah satu dari Nabi Bani Israel sedang berjalan, kemudian di tengah jalan hadirin ketemu dengan tengkorak, orang yang sudah lama meninggal, sudah tengkorak. Maka kelebihan dari Nabi itu adalah berbicara dengan orang yang mati. Maka hadirin, ternyata setelah dibangunkan, hadirin, orang ini adalah orang yang pernah menjadi penguasa di dunia ini, yang mempunyai begitu banyak harta, mempunyai begitu banyak binatang-binatang, hadirin, yang kedudukan yang luar biasa. Binatang peliharaan mempunyai kedudukan yang luar biasa, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, itulah cerita dari orang yang sudah lama meninggal. Kemudian bertanya lagi, bagaimana keadaan kamu ketika mati? Maka ya, jenazah tadi berbicara, hadirin. Dia katakan, jangan kamu tanya mengenai bagaimana kematian saya. Yang jelas saya ini mati sudah 1000 tahun. Ya. Sudah 10.000 tahun saya mati. Tapi sampai sekarang sakit ketika nyawa saya dicabut itu belum hilang, walaupun sebesar kuku. Itulah hadirin. Allah. Ya, ketika satu orang meninggal dunia, ya, dicabut oleh Allah ruhnya dan dalam keadaan kufur kepada Allah, itulah keadaan mereka. Ya, sehingga hadirin, ketika orang meninggal nanti dikubur, yang paling pertama akan ditanya, siapa Rabbu? Ya, man Rabbuka? Kemudian siapa nabimu? Apa agamamu? Ini pertanyaan hadirin kepada semua orang ketika nanti masuk ke liang kubur. Sehingga ya, yang pertama kematian kita hadapi, yang kedua kehidupan kubur akan kita hadapi. Pertanyaan itu nanti pasti akan ditanyakan kepada kita. Dan hadirin, orang-orang yang mampu menjawab semua pertanyaan itu adalah orang-orang yang berhasil memperbaiki imannya ketika di dunia ini. Dia tidak tertipu dengan kehidupan dunia, dia selalu memperbaiki imannya, memperbaiki amalnya. Hadirin, mengenai kubur ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwa kubur ini nanti bisa saja menjadi taman-taman surga bagi kamu, dan juga sebaliknya, kubur bisa juga menjadi taman-taman neraka, lembah-lembah neraka untuk kamu. Begitu juga hadirin, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa setiap hari, ya, supaya apa? Dijauhkan dari azab kubur. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, jauhkan kami daripada azab kubur. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, jauhkan saya dari azab kubur. Ini doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana doa kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita pada hisab nanti. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Allah, mudahkanlah bagi saya hisab pada hari kiamat nanti. Amin. Maka inilah kehidupan yang akan kita hadapi, dan ini pasti akan kita hadapi. कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। ये सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा, मील कदम जाएगा, या तो सलाई या मुराद करीब, और गर्मी के मारे भेजे पिघल रहे हो, और रैन के रास्ते से